I believe we are live, so I'll just take a moment. Let me have people joining in. Right. Alright, so we are having a few people joining in. Pehle, guys, happy Independence Day. Happy 74th Independence Day from my end and to you. I hope you all had an amazing Independence Day and I hope you all enjoyed. जी हाँ हम घर पे हैं but I believe that you might have done something special for आज की Independence Day and I hope you're all doing fine. I personally believe कि Independence Day और LPU में कुछ special ना होना, it never happens. That is why today we have gone so far to get you a celebrity just for the Independence Day event, just so that we can celebrate this and just so that this will be a memorable Independence Day despite us being at home. So in the next few moments, we'll be having a famous singer who has made her mark through numerous songs, some of them being Fir Bhi Tumko Chahungi, the female version, and Pallo Latke, which obviously I'm pretty sure you all have connected with. And trust me, we won't be just having her songs, we'll be having a lot of patriotic songs, ताकि हमें भी वो patriotism घर में बैठ के feel हो जाए, ताकि हमें पता चले कि हाँ आज Independence Day, we are at home, but we are doing something special, we are doing something absolutely unique, and we are doing something just so that you guys can enjoy your Independence Day. राइट डू टेल मी गाइस कि आपने इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या स्पेशल किया, घर में बैठे हुए हैं आप. आई नो दैट व्हाट डिड यू डू दैट इज एंटायरली स्पेशल जस्ट फॉर टुडे, दैट यू नो दैट मेड टुडे मेमोरेबल. आई वांट यू ऑल टू शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि पर्सनली मैंने आज हमारे घर में हर साल ये होता है कि इवनिंग शाम के 6 बजे के बाद वी पुट दियास आउट, we off the current, we off the lights, we off the fan, we put diyas out for nearly half an hour and we pay respect to all the soldiers, all the martyrs जिन्होंने अपने sacrifice के साथ हमें independence दिया था nearly 74 years before. That's what we do at my home. And I want you all to tell me what all do you do at your homes to celebrate Independence Day, or how do you celebrate the freedom celebration that we have today. Right, so I've got she'll be joining in. Guys, do get your questions ready, do get your song recommendations, do get your song requests ready, because we have Jyotika Thangri over here. Hello ma'am, how are you? Hi, I'm good. How are you doing? I'm good, and happy Independence Day ma'am. You're looking fabulous by the way, Thank and I hope you had an amazing Independence Day. Thank you and wish you the same. You guys have chosen a beautiful Thank you day ma'am. to do an Insta live with me. And Sure LPU ma'am. के सभी students और सभी faculty members को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इस दिन की. Thank you, ma'am. Yeah, let's get right into the live. And to all those people watching this, before the live, we never had a conversation, right, ma'am? We never had any predefined questions. So this is going to be completely impromptu, completely candid. We don't know what we're going to ask, so that's going to be really fun. And I'm looking forward to that. So tell me, ma'am, how is your quarantine going on and how are you handling the situation with the pandemic? Oh, I am having a great time. मैं पहले तो मुंबई में थी जब से लॉकडाउन हुआ, बट अभी मैं पंजाब आ गई इसी मंथ की शुरुआत में. आई केम टू माई मॉम एंड आई एम स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम विद हर. एंड मेरी मम्मा स्कूल में जॉब करती है तो उनको भी मेरे साथ क्वारंटाइन होना पड़ा क्योंकि मैं मुंबई से आई थी. उस बहाने हम लोग ने बहुत बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ. आई हैव बीन ईटिंग सो मेनी डिशेज, मॉम हैज बीन कुकिंग फॉर मी. एंड देन यू नो एवरी डे सुबह की वो जो कॉफी होती है पहली मम्मा के हाथों की, वो मिल रही है मुझे. सो आई एम अ हैप्पी किड. And I can see that on your face. I think यही सबसे बड़ा एडवांटेज है क्वारंटाइन का. हम सब लोग घर चले गए. I was personally stuck in Punjab for 2 months क्योंकि कैंपस बंद हो गया. I was staying outside and I didn't know that कि क्वारंटाइन इतना बड़ा हो जाएगा. And I remember traveling in a train filled with people, then traveling in a bus filled with people while Corona was at height, just to see my mother at home, just to have food from home. And I think this is what we are all looking for. Like यही सबसे एडवांटेज है क्वारंटाइन का कि घर में बैठे हुए getting homely food, getting the morning coffee. Absolutely. And yes, ma'am. And Independence Day, what special did you do today? What's the special thing that you did today on for the Independence Day celebration? टुडे इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में मिलके मैंने मेरा पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनाया है. वी मेड एन इंडी म्यूजिक. इट्स अ सॉन्ग फॉर इंडिपेंडेंस डे और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोटिवेशनल सॉन्ग. और अभी हम लोग एक्चुअली पूरा दिन उसमें ही लगे हुए थे एंड कुछ ही देर में वो गाना रिलीज भी हो जाने वाला है. सो आप लोग सब बहुत प्यार भी दीजिएगा, उस गाने को शेयर कीजिएगा, सुनिएगा अगर आपको अच्छा लगे.
I've tried to write a song like this for the first time. मैंने पहले इस तरह का गाना कभी नहीं लिखा है, so I hope आपको अच्छा लगेगा. जी हाँ मैम, यू वेटिंग फॉर दैट. आई बिलीव सॉन्ग का नाम है जुनून पे सवार. आई सीन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल. आई बिलीव दैट्स द नेम. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट. इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आर बीइंग द ट्रेंड राइट नाउ, एंड आई होप आपका भी काफी बड़ा हिट हो जाए. Thank you so much. जी हाँ मैम. एंड बिफोर वी स्टार्ट गोइंग टू द अदर क्वेश्चंस, कैन वी हैव अ पेट्रियोटिक सॉन्ग फ्रॉम योर एंड? क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस से ये प्रॉमिस किया था कि हम काफी सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग गाएंगे आज. वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ पेट्रियोटिज्म ऑन लाइव, सो कैन वी हैव अ सॉन्ग फ्रॉम योर एंड? डेफिनेटली. सो जब क्वारंटीन शुरू हो गया था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, तभी मुझे मौका मिला था एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना. बी प्राक जी की आवाज में तो आपने सुना ही है, तेरी मिट्टी. बट मुझे जी म्यूजिक कंपनी ने अप्रोच किया कि एक फीमेल वर्जन वो मेरे साथ करना चाहते हैं. तो आई थिंक दैट वुड बी वन सॉन्ग व्हिच आई वुड लव टू सिंग हियर फॉर यू ऑल टुडे. सो हियर इट इज. यस मैम, श्योर. नन्ही से हंसी, भोली सी खुशी, फूलों से वो बाहें भूल गए. जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए. हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन सो चांद बुझे. हम नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. ओ ओ ओ Thank you, ma'am. And goosebumps, literally goosebumps right here. That song itself gives goosebumps to all those who, listen to that and hearing it live. We hearing it live. I remember B Prak sir आया था campus में, I think 2-3 months back before quarantine got over, and we had the opportunity of listening to this live. And अब यहाँ पे भी ये सुन के, it is giving me literal goosebumps right here. Guys, trust me, और ऐसे गाने होंगे और ऐसे goosebumps moment होंगे. But then let's move on. I don't want to get all things done right away. So let's get right into your story, man. Sorry, I didn't catch you. Let's get into your story. जैसे मैंने आपका प्रोफाइल रीड किया था, you started with quite a few reality shows. जैसे you started with The Voice, फिर then you went to Saregama. So how did you get into the field of reality show? सो रियलिटी शो का बहुत इजी होता है. ऑडिशंस आप दे सकते हैं पूरे देश में. इनफैक्ट अभी तो इंटरनेशनली भी हर जगह ऑडिशंस होते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मुझे टीवी पर एक दिन मैं देख रही थी, फ्लैश हो रहा था कि द वॉइस इंडिया फर्स्ट सीजन होने वाला है. एंड मेरा तब BA कंप्लीट हो ही चुका था. So I was anyways looking for an opportunity कि मैं मुंबई जा पाऊँ किसी तरह, because I wanted to pursue my career. तो फिर what better than a reality show. तो द वॉइस आया एंड आई यूज्ड टू फॉलो द शो. इंटरनेशनल जो होते थे सभी सीजन्स, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया. एंड देन आई वेंट फॉर द ऑडिशंस एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड एंड इट वेंट रियली वेल फॉर मी. मीका पाजी की टीम में मैं सिलेक्ट हुई थी. लेकिन मैं उस शो में ज़्यादा देर आगे नहीं जा पाई. वो शो जब खत्म हुआ, बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ, बिकॉज उसके बाद फिर मैं मुंबई में ही रह गई. फिर मैं जलंधर नहीं आई, मैं वहीं की हो गई. मेरी मम्मा ने मुझे इनफैक्ट बहुत सपोर्ट किया. शी वाज लाइक, यू शुड गो एंड स्टे इन मुंबई बिकॉज यू वांट टू बिकम अ सिंगर. तो वहाँ पर ही अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. एंड एक्चुअली बहुत अच्छा रहा वो मेरे लिए डिसीजन. Yeah, ma'am, I think you're so lucky that your parents were so supportive, because मैंने काफी सारे लोगों की स्टोरी सुने हैं जहाँ पे peer pressure और community pressure के कारण they end up not following their passion. There were a lot of singers, actors, dancers, but then in your case you're so lucky. So how would you say your parents, how would you say they influenced you completely? The support from your parents to take this big decision. आई थिंक उनके सपोर्ट की वजह से ही मेरे हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल जो होता है ना, वो कट गया. बिकॉज वो लोग हमेशा मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर जैसे. वैसे मेरे पापा जो है, हमने उनको खो दिया था 2012 में. वो एक्सपायर हो गए थे.
एंड बट उसके बावजूद मेरा जो बड़ा भाई है वो दुबई में जॉब करता है, सो मेरी मम्मा और मैं ही हम लोग रह रहे थे जलंधर में। बट उसके बावजूद मेरी मम्मा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, एक बार भी वो सेल्फिश होके उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अकेले रहूंगी, बट उन्होंने मुझे आगे भेजा मुंबई में। आई थिंक इतना बड़ा डिसीजन ले पाना, इट्स I should say hats off to my mom, man. She's my idol. I would love to be even 1% of what she is. So yeah. Yeah, ma'am. And full respect to your mother for raising you so well and for raising your brother so well as well. Being a single mother is not easy, and I can't, say it in words कि कितना मैं respect कर रहा हूँ for her to take the strong decision. Full respect from my side. Thank you. Very sweet. Yes, ma'am. And how did your journey in, let's just say, the reality show from Saregama and The Voice, how did that help you boost your career to go into the professional field of Bollywood music? So frankly speaking, जब सारेगामापा खत्म हुआ उसमें मुझे बहुत बहुत ज्यादा फेम मिला, मुझे लोग पहचानने लगे, मुझे शोज मिलने लगे ग्राउंड लेवल पे। सो बट वो जो एक ग्राउंड लेवल का फेम होता है दैट इज टोटली डिफरेंट, एंड इफ यू वांट टू वर्क इन बॉलीवुड, उस वक्त की बात कर रही हूँ 2016, तो तब अभी तो सिनेरियो काफी बदल चुका है, एज यू सेड इंडी म्यूजिक इज ऑन एवरीबॉडीज माइंड। तो Yes, ma'am. लेकिन अगर बॉलीवुड में उस वक्त ब्रेक चाहिए तो वो एक अलग ही स्ट्रगल होता है, इवन इफ यू आर अ सारेगामापा फाइनलिस्ट। तो आपको मैं अपनी बात करूंगी कि बहुत सारे कंपोजर्स के लिए स्क्रैचेस में गाने लग गए थे, बट आई हैड अ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम मिका पाजी हु वाज माय मेंटर इन द वॉइस, एज आई टोल्ड यू ऑल। सो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, उनके साथ मैं शोज भी करती थी, उनके लिए ओपन करती थी, और उन्होंने बहुत लोगों से मुझे मिलवाया, गवाया, उनको सुनवाया। सो उससे मुझे काफी हेल्प मिला। बहुत सारे स्क्रैचेस गाने के बाद फिर वन फाइन डे one of my songs got selected in film, and that's how I got my first Bollywood break. Yeah, ma'am, that's actually great. So, of all the moments that you might have felt down, कि I can't do this anymore, मेरे से नहीं हो रहा है, I don't know if I'll make it big. How did you overcome those moments? You're alone in Bombay, you're there, बड़ा सा industry है. There are moments. There might have been moments you might have felt कि नहीं होगा ये मेरे से. So, how did you overcome those moments and reach where you are today? So that's very true. ऐसा होता है क्योंकि आप इतने सारे गाने रिकॉर्ड करते हो, उसमें से एक भी रिलीज नहीं हो रहा होता है। आप देखते हो, आपके देखते ही देखते दूसरा ही कोई वो गाना गा के चला जाता है और फाइनली उसका गाना आता है। तो एक मौका मेरे साथ ऐसा आया था, बट देन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मैं म्यूजिक छोड़ दूं या मैं चली जाऊं। तो मुंबई में मैं जब थी एंड मेरे गाने में काफी रिकॉर्ड करी थी, बट कुछ रिलीज नहीं हो रहा था, तो मैंने ट्राई किया कि ठीक है, आई स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, लाइक जिंगल्स गा दूंगी। और क्योंकि आपको पैसे भी चाहिए, आप इतने बड़े शहर में रहते हैं, यू हैव टू सर्वाइव। एंड इवन दो माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव ऑलवेज, मुझे कुछ भी जरूरत होती तो वो लोग दोनों हाथ फैला के मुझे मदद करने के लिए तैयार थे। बट आई डिडंट पर्सनली वांट दैट, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना था, मुझे कुछ भी नहीं मांगना था उनसे पैसे। सो वो भी एक मौका था, बट देन आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम मिला, बहुत अच्छे लोग मिले। सो उसी वजह से आई कुड मेक इट in this much of time. So I think luck also matters, and also आप करते रहिए, आपको हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। I think एक ना एक दिन आपका वो वक्त होता है, and you have to just wait and keep working on that. Yeah. जी हाँ मैम, try until you succeed. And I think जितने भी freshers, you might not want to do a 9 to 5 job. You might not want to do any, let's just say, a normal job. But then if you want to do something great, you'll have to try. There will be failures. Sooner or later, you will face a moment where you'll have to give up. You might want to give up, but then you'll have to push through. You'll have to see that, okay, I can do it. एक दिन आएगा जब I'll be proud of myself. Absolutely, that's very true. Yes, ma'am. And I'm getting a lot of song requests also. I'm getting a lot of people saying, "Bhaiya, bolo song ke liye." So, can we have a song from your end? Any song of your choice? Definitely. Actually, मैं भी बहुत सारे messages पढ़ रही थी, and I wanted to say hi to all of them, but it's actually not possible because so many of you guys have joined us, and thank you so much, man. I mean, it's such an honor कि आप वक्त निकाल के हम लोग से मिलने आए हैं इधर। And I could see एक तो request, वसुंधरा कॉल, उन्होंने एक request दिया है, फिर भी तुमको चाहूंगी। So I'm gonna sing a few lines of that for you, Vasundhara. Yes, ma'am. I hope you will like it. And also this song, ये मुझे मेरे करियर के काफी शुरुआती दिनों में गाने मिला था, so it's very special and close to my heart. Okay. Yes, ma'am. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद आलम न रहे,
कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हमको जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी. I don't think I need to say anything क्योंकि इतने अच्छे comments आ रहे हैं. I don't think I need to put anything from my end. And I actually listened to the song on YouTube once क्योंकि जब ये song release हुआ था, we had the movie version. So I was browsing through YouTube. I found the female version of the song and I was like, this should also be there out there. This should have been in the movie as well. This is as good. And live सुन के it's a better feeling. So I'm expecting कि quarantine के बाद we can have a live performance from your end. Okay, In LPU. that'll be amazing. I would love to be there. जी हाँ, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स इवेंट मैनेजर्स देख रहे हैं गाइस, सुनो, मैंने अपना काम कर दिया, मेरे यहाँ से डील फिक्स किया है, अब आप लोग देख लेना क्या करना है, कैसे करना है. आफ्टर क्वारंटाइन वी आर हैविंग अ परफॉर्मेंस, दैट्स इट. आई डोंट नो व्हाट्स हाउ नीड टू बी डन. I would love. जी हाँ मैम. Yes ma'am. So when it comes to music, which is your favorite genre, and you know which music do you usually listen to? Folk, since I am a Punjabi. Folk. So Punjabi folk. Okay, so can we have a Punjabi folk song from you? Because I don't listen to that much Punjabi folk. I am not that exposed to that side. So any Punjabi folk song that you want to sing? Okay, so there's one song that I always love to sing whenever I'm performing, wherever in the world I am. So वो ही गा देती हूँ. Here it goes. Allah for Allah, चंबे दी बूटी, मन दी मिट्टी विच लाई तू, इस मिट्टी दा ना मौसम कोई, हो बिन मौसम यार खड़ाई तू, ओ जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, अते जिसे बूटी लाई हो फिर मेरे जुगनी जी, ऐ वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी, ऐ वे नबी पाक दी जुगनी जी, ऐ वे मौला अली वाली जुगनी जी, ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी. Thank you, ma'am. And even though I couldn't understand that much, but I'm just feeling आ रहा था कि अभी नाचना है, मुझे अभी नाचना है. और like if I dance, everyone will run away. Usually I stop myself. That's why. So otherwise I would have danced then and there. That is the power of this song, and mostly that is the power of Punjabi folk. I think कोई भी अपना जी हाँ मैम. अपने आप को रोक नहीं पाता पंजाबी सुन के. और मैं देख रही थी बहुत सारे मैसेजेस आए थे, कोई तो लिख रहा था सिरा. Epic. Thank you man, thank you so much. जुग जुग जीवे ज्योतिका जुगनी जी, love you. Singer मौसमी, I think she is a singer too. Okay, so okay. Another time we will invite her as well. I am all ready. We just want people to come in. We just want, you know, अभी quarantine के time में we can't have people in the campus. So for all the freshers, अभी admission का time है, so we are having a lot of freshers joining in. So we want to show them कि even though it's quarantine, यहाँ पे हम फिर भी events करेंगे, यहाँ पे हम फिर भी celebrities को लेके आएंगे. And you're one of the best celebrities that we have had so far. Thank you so much for this, man. Thank you so much. That's very sweet. Yeah, ma'am. And from when have you been, you know, practicing the art of singing? Just say from a childhood age. So how long have you been practicing this? So I think I remember I was 6 or 7 years old, and मेरे स्कूल में ही मेरे गुरुजी मुझे मिले इनफैक्ट, और वो म्यूजिक टीचर थे हमारे, और फर्स्ट डे था उनका क्लास में, एंड ही आस्क्ड एवरीबॉडी टू सिंग अ सॉन्ग. तो मैंने भी गाना गा दिया, एंड उनको बहुत अच्छा लगा. एंड देन पेरेंट्स टीचर मीट पे उन्होंने सजेस्ट किया मेरे पेरेंट्स को दैट आई शुड स्टार्ट लर्निंग बिकॉज आई हैव अ गुड स्कोप एंड गुड वॉइस. सो मेरे पेरेंट्स ने बोला ओके
एंड मैंने उन्हीं से सीखना शुरू कर दिया। फिर मैंने 15 साल लगातार मेरे गुरुजी श्री धर्मेंद्र कथक जी, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। इनफैक्ट इट्स हिज बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। Okay. Happy एंड birthday, Guruji, from my side as well. सो या, तो उन्होंने मुझे सिखाया। एंड फिर मुंबई जब तक मैं शिफ्ट नहीं हुई तब तक आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड दैट्स हाउ। Okay, so it's been like 15 years, 15 to 16 years of continuous practice. Guys, so no, you have to put in that much practice if you have to make it fuse. You can't make it in a day or two. लगता है क्या? It takes more than a decade of practice and proof है हमारे सामने अभी. She has put in a lot of practice and right now she is one of the best singers that we have. थैंक यू। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इतने साल, मतलब ऐसा अगर कोई एस्पायरिंग सिंगर है वो सुन रहे हैं इस बात को, तो आप कभी भी चाहें तो आप सीखना शुरू कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कोई भी चीज में, इनफैक्ट नॉट इन जस्ट म्यूजिक, so you can do anything if you are interested in it and you are ready to put in time and efforts. Yeah, ma'am. And I've got a question. It was an old question. I forgot about it. It was like any Riyaz tips. So I was getting that question repeated. So they wanted tips regarding Riyaz and practicing. So what would you give as tips for an aspiring singer? So if you're a beginner, then you must stay like learn to stay on one note. तो आप क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या होता है कि आप कोई भी सुर को सा बना सकते हो। सो आप कोई भी सुर लीजिए से कुछ भी हाँ, तो आप उस पे ना आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बहुत देर तक एंड कोशिश कीजिए एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट ना आफ्टर 10-15 मिनट्स यू विल लाइक ऐसा मेडिटेशन स्टेट में चले जाएंगे। सो यू नीड टू रीच देयर। आपको अपने गले को याद कराना पड़ेगा कि हाँ ये नोट है, और उसको रेफरेंस बना के फिर आप 7 सुर होते हैं, वैसे टोटल 12 होते हैं, बट 7 सुर जो होते हैं बेसिकली आपको उनसे दोस्ती करनी है। सो सारे गामा पा नी, उनको आपको याद करना है कि सा अगर आप कहीं से भी शुरू करें आप रे गा मा पा धा नी गा सके। सो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, और उसके बाद आप जब फेमिलियर हो जाते हैं सुरों से तो आपके दोस्त बन जाते हैं, देन यू कैन प्ले अराउंड विद देम, कंपोज, सिंग, व्हाटएवर यू वांट। Yeah, ma'am. And even though I didn't get the technicality, जो भी ये पूछा, I hope you got the answer. There was a time when I sang on stage. I remember a few months back before quarantine got over, there was this EDM night that we had. So we made this deal, me and my co-anchor, we made this deal कि event खत्म होने के बाद we will do the Cream We Will Rock You वाला in front of the audience. So we had nearly 10,000, 15,000 students there. Last day of the college fest. तो EDM night खत्म हो गया. हमारे पास I believe 10 to 15 extra minutes था, तो हमने सोचा कि चलो करते हैं, let's do it. So my throat was messed up. I had spent it complete like तीन दिन का festival था. I had a completely destroyed throat. It's not like अच्छा throat के साथ भी मैं गा सकता हूँ, but then excuse है मेरे पास कि my throat was destroyed. My co-anchor's throat was also destroyed. So we were there and we started singing, and luckily people didn't run away. People actually started dancing to the song, and we had a great amount of students who were singing We Will Rock You Back. So they were putting the beats in, we were doing it that. So that's the only experience I have singing. पर उसके बाद हमारे फैकल्टी ने बोला कि सुनो बच्चा, अब तुम सिंगिंग छोड़ो, just stick to speaking on stage. Let's leave the singing to the professionals. We'll call somebody if you want to do a stunt like that. चलो सर, as you say sir, I'm not going to sing anymore. But that's great to know about the moment you guys had. It's amazing. और जब बहुत सारे लोग एक साथ गाते हैं, तुमको पता है, it's a fact कि कभी वो बेसुरा नहीं होता है। मतलब भले कोई भी अलग अलग कुछ भी गा रहा है, बट एक साथ ना जब बहुत सारे लोग गाते हैं ना, it comes out in one sur only. So that's a crazy fact, but yes, it is. Yes, it did come out like that. Thank God. I don't know what happened. I was pretty sure they'll kick me out, but it didn't happen. I was pretty happy with that. Super. Yeah, ma'am. And I wanted to get to the song that you're releasing today. That's something I want to talk about a lot. Like this Junoon Pe Sawar. On the day of on Independence Day, you're releasing a song. So Yeah. do tell us something about that. It's an independent song. आजकल काफी trend में चल रहा है. So do tell us about that. Okay, so ये जो गाना है ना, एक्चुअली हम लोग ने अभी के सिनेरियो को देखते हुए कि बहुत सारी ऐसी दिल तोड़ देने वाली चीजें रोज सुनाई देती है, कोई ना कोई न्यूज आती है, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो हम लोग बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को यही याद रखना पड़ेगा दैट वी नीड टू गो ऑन, एंड हम लोगों को ही हिम्मत रखनी पड़ेगी। और मुझे पता है जिसके साथ बीतती है उसको ही उसका एहसास होता है दर्द का, बट स्टिल वी नीड टू कीप गोइंग ऑन एंड कीप रियलाइजिंग हम लोग के अंदर जो शक्ति है, जो हमारे अंदर पावर्स है, जो भी हमारी खूबियां हैं, उनको लेकर हमें आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। सो दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी टू राइट द सॉन्ग,
And also, I would like to tell you all that the song is being composed by Kushal Paul. He's a very good friend of mine, and he's a great composer. And it's his debut actually as a composer, independent music में. But trust me, जब आप ये गाना सुनेंगे ना, आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसके एक एक शब्द को सुनकर, इसका मीनिंग समझकर अगर आप उसको इम्पोज करेंगे अपने ऊपर, तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम द जनरेशन, फ्रॉम द यंग जनरेशन, द पीपल वी हैव. You guys, in fact, we all are the future of our world, and हम लोगों को ही हिम्मत रखनी पड़ेगी. So yeah. Yeah, can you have a teaser? I don't know if I'm supposed to ask this, but after listening about that so much, can you have a small teaser, like LPU Live exclusive teaser of Junoon Ke Sawal? It is actually going to be very exclusive because I've never sung this song पहले यहाँ से कोई भी जगह पे. And okay, let's do this. Actually, I'm gonna sing the first verse of the song. So पहली कुछ लाइनें जरूर आप लोगों के लिए गाऊंगी exclusively on LPU's Instagram, guys. I've not done this anywhere before. So yes, do tell me आपको कैसा लगा. And guys, you're welcome. मैंने पूछा, I'm not sure if I've asked this, but मैंने just पूछा, तो guys, you're welcome. Okay. उड़ जा रे परवाज़ भर, बाकी है तेरा सफर. तू आग है जल गिरे तो संभल, तू चीर के बादलों को निकल. है ख्वाब बड़े तो हाथ बढ़ा, जो साथ दे तो बदल दे जहां. जागा है सवेरा लेके रंग हजार, आजा रे तू अपने जुनून पे सवार. एक हो जाए जब 100 करोड़, हम तकदीरों को देंगे मोड़. तू दिखा दे इंडिया, करके दिखा दे इंडिया. लाना है एक ऐसा दौर, होगा जहां बस अपना शोर मचा दे इंडिया. करके दिखा दे इंडिया. Now I'm just waiting for the song. मैं कुछ नहीं बोलने वाला. I'm just waiting for the song. I'm getting the feeling कि अभी कुछ कर रहे हैं. Let's do something. Let's do something. That kind of feeling is what I'm getting from the song. And I'm just waiting for it to be released in the next few hours, guys. So no, next few hours में do visit ma'am's profile. You'll get the song, listen to it, and go do something. Just go do something. Oh my God, you don't know. I'm so emotional right now. I mean, seeing the reaction ऐसे सामने अपना गाने का, because it's like a baby for me. और आपको अच्छा लग रहा है. Oh my God, let me see the comments also. Thank you so much, guys. मुझे बहुत बहुत encouragement मिलेगा अगर आप लोग इस गाने को support देंगे. And फिर मैं बहुत सारे गाने बनाऊंगी ऐसे. जी हाँ मैम, and we'll get more exclusive on LPU Live. We'll keep supporting you to get more exclusive on LPU page. We hope that you keep on creating songs, and we'll be here to listen to them, ma'am. Thank you so much. Thank you. God bless you all. Thank you, ma'am. And before I started this live, I had this thing in mind that कि आज बहुत सारे लोग हमारे साथ join करने वाले हैं who are from an army background, जिनके parents अभी army background में हैं. And there are people who are going for an army examination or trying to get into the army. So for them, I want to do something special. So before we get to that, can we have a few words from your side for all those people whose parents or grandparents are from the army background? I think आप लोगों को तो मैं और क्या बोलूं, आप लोगों को शत प्रणाम है. आप जो काम करते हैं एकदम सेल्फलेस होकर, अपनी आपकी फैमिलीज को भी बहुत बहुत सल्यूट है मेरी तरफ से कि आप अपने बच्चों को जाने देते हैं अपने से दूर, ये बिना सोचे कि वो वापस आ पाएंगे कि नहीं कल को, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, खुदा ना करे. तो आई मीन you guys, the way you contribute to the society is incredible. उसका कुछ मोल नहीं लगाया जा सकता. It's अनमोल. तो आप लोग को बहुत बहुत प्रणाम है. और मैं तो being a musician, being an artist, मैं सिर्फ अपने म्यूजिक से ही आप लोगों को एक सल्यूट दे सकती हूँ. एंड आई होप आप लोगों को तेरी मिट्टी अच्छा लगा हो. So I would like to dedicate that song to you all and to your families. So
That's it. Yeah, ma'am. And I think we're able to sleep properly at night just because we have such amazing warriors at the border. जो सुबह से रात तक in extreme conditions they are protecting us. And आज Independence Day में I'd like to salute each and every person, no matter which role they perform in the army, no matter what they have done for the army, for serving the country. It takes great courage, it takes great effort. And I don't think we appreciate them enough. हमें और appreciate करना चाहिए. And it's not just on Independence Day or Republic Day. हर दिन we have to remember कि they sacrifice day in day out, and it's just because of them that we are able to sleep at night. We are able to be so safe. That is very true. And here's a salute from my side. And it's really Yeah. heartfelt. So thank you so much. Very big thank you. And like I said, I want to do something special. So patriotic songs have we had Teri Mitti, but we have a lot of people more joining in. So for them, can we have one more patriotic song? Any song of your choice from your end? Definitely. If there is anything, I can see Vande Mataram also. किसी ने लिखा है. If there is any other, in fact, actually, we can do Vande Mataram. Sure, man. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है. 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं. मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है प्यार ही बस तेरा. माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. Thank you so much, ma'am. And speechless, literally, आप absolutely speechless हुए हम पे, क्योंकि अभी मुझे याद है पिछले साल जब इंडिपेंडेंस डे हुआ था, I went to the Wagah border in Amritsar. It was so rushed up. It was like a huge crowd was there. काफी मुश्किल था अंदर पहुंचने के लिए, but then I remember वहां पे they played Vande Mataram out there, and we had a huge crowd over there. They were all chanting Vande Mataram, and I think everybody at home right now is getting a similar feeling कि हाँ, this is India. We are proud to be Indians. And if anybody hasn't visited Wagah border, guys, do visit Wagah border. It is something absolutely, I can't put it in words. It's something, it's a different feeling. I'm sure. I've been there, and it is, surely it is. It is, ma'am. Thank you so much for that song, and I think काफी सारे लोग अभी emotional भी हो रहे हैं comments में, they're reminded of their background, they're reminded of all that they had to go through, and a salute to all the warriors of India, a salute to all those who are there on the borders and supporting us. Absolutely. जी हाँ. So, ma'am, like let's move a bit forward. So let's get the emotional state out. हर दिन जब भी मैं live जाता हूँ, this what I do. That's called a rapid fire round. जो भी celebrate करते हैं, I do a rapid fire round. And completely completely impromptu. I don't even have the questions. आज के लिए भी questions भी नहीं है मेरे पास. Usually I have some questions. आज वो भी नहीं है. So I'm gonna shoot questions from my mind, and you have to reply within 5 seconds. Chalo. Done? Let's do it. Still already? Okay. Okay. So let's start with simple questions, and I'll go for a bit tougher ones. Okay? Okay. Okay. Favorite food? Pasta. Favorite travel destination? USA. Okay. Favorite actor? Shah Rukh Khan. Favorite actress? Deepika Padukone. Favorite singer? Sonu Nigam and Sunidhi Chauhan.
Okay, so if you had a chance to take someone to Mars, यानी वो planet Mars, who would you take? I can't live without my mom ज़्यादा देर तक, और अगर मार्स जाना है तो लंबा ही होगा. So yeah, I would like to take her. Okay, if you were given the opportunity to spend your last day on Earth with three people, Mm-hmm. whom three would you choose? Okay, of course it's gonna be my mom. It has to be my brother, and it has to be my bhabhi also. So I'm being a little, I don't know, diplomatic or whatever you call it, but yes, family comes first for me. So they, Okay, that's fine. I can relate to that as well. Family always comes first. yeah. जी हाँ मैम. So next one, favorite song. My favorite song, I just sang it, Jugni Ji. It's my all-time favorite. All time favorite. All right. Favorite movie. Um, Actually, it keeps changing. I watched this very amazing movie called Shakuntala Devi. I loved it. Vidya Balan. It was an amazing movie. Everyone should watch it. It's beautiful. Yeah. So okay, so we're gonna be Shakuntala Devi for now. All right. Favorite performance that you've done so far. I went to Nepal last year. It was in LOD. It's the Asia's biggest club, and the crowd there was amazing. The feel, the vibe, and my band also played amazingly well that day. So yeah, I keep reminding right, so- of that. Yeah. Favorite song that you've sung. That's a nice one. It has to be Ishq De Faniyar from Fukre Returns. It's a beautiful one. Okay. If you haven't heard it, We'll get to that song after some time. We'll have that song on live. So now I'm going for a tougher question. Favorite judge from Saregama. Sorry, favorite judge. Judge from Saregama. It has to be Mika Paji. Okay. And from The Voice. Sunidhi Chauhan. Trinity Chauhan. So when I ask these questions to people, right, usually they will like, चलो who can I say? काफी diplomatic हो जाते हैं. You're the first one who said outright कि ये मेरा favorite judge है. That मेरा plan पूरा खत्म हो गया. I was planning to trap you with questions, but then you were outright there and you're there. So guys, I'm done with my questions. If you guys have any, rapid fire questions from your end, do put it there. Let's ask that because मेरे पास जितने भी questions है खत्म हो गया. Or for the rapid fire. So if you guys have any rapid fire one-word questions, do ask them. Let's see if they can get creative. So are we gonna ask the people, like लोग लिखने वाले कुछ? Yeah, we'll just take 2 seconds and we'll see if they have any one-word questions that they can ask. Let's see how creative the students of LPU are. क्योंकि मेरा जो plan है पूरा खत्म हो गया. I plan to trap you with the question, वो तो खत्म हो गया. Got you. Guys, it's not fair. I love you all too, Chirag, Singh. Thank you so much. Sujit Kumar, Arya. All right, so I don't think they are dropping any questions, guys. आप भी मुझे, you guys are also trapping me. I hope that my okay, favorite place on earth. Oh, sorry, favorite place on earth? Yeah. That's a difficult one. It has to be, I don't know, I went to Mauritius. It was very beautiful. Okay, so Mauritius. Guys, very good. एक और question डालो, guys. Come on, we need more questions from your end. Acha, I can see there's a very talented singer and very beautiful friend of mine, Sharvi. So वो भी उसने भी join किया हमको. And she's asking me who's my favorite composer. Okay. So I think there are many, but I think Amit Trivedi is one of them whom I really want to work with. Right. I remember Amit Trivedi. He also came to the campus with Coke Studio last semester. One of the best events that we had. He started with Namo Namo, and he had a lot of songs. Ek Tara, so and Dear Zindagi, Love You I've seen Zindagi. him So perform. I've seen his live. It's amazing. And you know what, Sharvi, whom I'm talking about, जिसने मुझे पूछा, she has sung Amit Trivedi's latest single, Morni hai. Beautiful it is. I just love it. Love you, Sharvi. okay, so guys, event organizers, we have someone, a talent singer Shari with us. We'll bring her live tomorrow, day after. I'm leaving that to you guys. She has sung a song you want to hear. And also Sharvi has sung in our song Junoo Pe Sawar, so उसकी भी आवाज आपको सुनने मिलेगी. Sharvi ने भी गाया हुआ है, so आज ही आप Sure. सुना. We are looking forward. I got a question. Favorite instrument? Violin.
Do you play the violin? I do. Oh, that's a really of all the instruments that I know, I would say piano and violin. I do follow a bit of classical music, so piano and violin have always been there with one of the toughest instruments that I know I've known. It actually With is. It's very classical tough. composers, I don't play you it so know. well, but I know thoda bahut, so I can play a little bit. Yeah. So I do follow a bit of them. So I've seen them suffer a lot. कि ये कैसे करने the bow strings and it needs to be parallel. So I'm not sure if I'm getting the technicalities right, but then what I've seen so far, that's what I've got to know that violin is pretty tough to master. It is. All right, so let's move on from the rapid fire round. The song that you were talking about from Fukre 2. Now it's a time for that. Your favorite song that you've sung so far. Let's have that here. Definitely. Before I sing, I have to answer this. Sneha Ike has written, "Can you play a bit?" I would love to have played it for you, Sneha, but I don't have my violin on me right now. It's in Mumbai, so next time, or maybe Next time, another time. I'll make a video and post it to you. All right, let's do Yeah. Ishq De Faniya. इश्क दे फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए इश्क दे फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए सौ सौ बातें मारे किया मारे अखियां उस नीचे छत से उतारे अखियां सौ आवाज़ें मारे अखियां एक उसका नाम पुकारे सोने रंग दे रांझिया तेरे ही जैसे लगते हैं सारे डर लगता न हो जाए यारी सोने रंग दे रांझिया पूछ ले तू चांद से गिनती हूँ तारे ओ डर लगता न हो जाए यारी सोने रंग दे रांझिया Absolutely beautiful, ma'am. And I think the audience also loved it. They are putting a lot of comments and they are pretty much loving your performance. And I think we're all excited to see you in campus. बस वही हमारे भी bucket list में कि quarantine खत्म हो जाए. We'll have ma'am in campus. We'll have an amazing concert out there. We'll bring your friends as well. We'll bring all the performers and we'll have one hell of a concert back in the campus. Wow, that sounds amazing. Okay, let's do this jaldi se. Yeah, jaldi se. I'm just saying, Corona, भाग जाओ. We are having a performance. We need you to go. We don't want you anymore, Corona. Please go. Yeah, ma'am. And this is a question that I usually ask people when they come on live: is that if you were to meet your younger self, let's just say your 5 or 6 year old self, and what would you say, to that kid out there? कि future कैसा है यार? क्या? What would you say? मैं बोलूंगी सही ही जा रही हो जो कर रही हो करती रहो बस शिद्दत से लगी रहो बेटा What's the answer? Right. I didn't expect that answer. I was expecting something a bit more. I'm caught off guard right here. Let's give me a moment. Let me catch myself. All right. I have a song that I wanted you to personally sing, which was Palo Latke, which became a huge hit. Like it became a great trend. It became a great trend. Make me realize that, oh my god, this is such a good song. This is there, and we want to dance to that song. So can we have that? Definitely, I have to sing that song for you all. You have made it such a massive, biggest hit of my career as yet. So thank you so much, and I dedicate it to you all. Here it goes. Hi, 2 तोले की मुंदरी लाते 3 तोले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना ना समझ तू चीज पुरानी चेहरा मेरा पीस नूरानी देखेगा तो खा जाएगा ससा झटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जाओ बाल माँ पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके
पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके रा फेस बलेती घूंघट देसी ब्लेंड बढ़ाई धाकड़ तो बॉलीवुड मेरा डंका बचता डाउन तो रख थोड़ी आकड़ तू ब्यूटी ने किए मेरे लौंडे बावले बात अलग मेरे फेस में रे कैटेगरी ना घनी से पर मेरी जैसी नरानी पूरे देश में रे धीरे धीरे चुनरी सरकने लगी मेरी धक धक धड़कन बढ़ने लगी थोड़ा क्लोज तो आजा बेबी मुखड़ा दिखा जा बिना पीते ही मुझे तो यार चढ़ने लगी साजना वे आंख तेरी है बदतमीज रे पानी पानी कर दे शर्म से है ऐसी चीज रे है नियत की खोटी कर दी बदमाशी बेईमान भी है ये हाँ अच्छी खासी मान जाना कर मन मानी बोली जावे मेरी जवानी मेरे जलवों का असर है सबसे हट के से Pallu Leke. Oh, I just spoiled the song. पल्लो लटके जरा सा आहा जरा सा ओहो जरा सा टेढ़ो हो जो बालमा पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके I can't even look. I just spoiled the song. Sorry, guys. If it was on stage, I'm pretty sure chorus में हम गाएंगे तो मेरा आवाज उतना नहीं आएगा. So I would have got lost in but you the did, audience. you sang right, you caught it. Yeah, I did get it. Although not that good, but chalo, me. And I think like we are reaching towards the end of today's session. So anything you want to ask me? I had an amazing time talking to you. इतना candid, impromptu live अभी तक I don't think LPU live में अभी तक हुआ है. Thank you so much. So anything you want to ask me or to the audience who's enjoying this session? I would actually like to ask you if you guys are having fun, if you think that this was worth it, because सबका time जो होता है it's very precious. Or obviously you could have done anything else, but you decided to be here with me, and it's actually a very big honor for me. और मुझे बहुत मजा आता है जब भी मैं face to face, because I'm really missing that face to face connection, and जो stage पे हम लोग करते थे, because there are no stage shows happening since so many months. So I personally love doing these kind of lives, and जहाँ पर लोग इतने प्यारे प्यारे comments मुझसे लिखते जा रहे हैं, they're sending me so many hearts. Thank you so much, guys. Thank you for all the love. And what can I ask you? अच्छा, आप लोग बताओ, आपको मेरा सबसे फेवरेट गाना कौन सा लगता है? Your favorite song so far? Yeah. I would say Pallu Leke is my favorite, and फिर भी तुमको चाहूंगी the female version. Those two would be my favorite. Thank you. So I sang it for you. Then तो हो गया. If there is anything else, अगर आप from the audience watching me, guys, anything. I'll just take a moment. I think there's an audio difficulty from my end. Just one moment. I think there's something acting up. Right. So am I audible to you? Actually, a little not clear. I'll just take just one moment. I'll just खुद की आवाज आ रही थी actually. Yeah, I think it's fine now. Yeah, now it's much. I just got a call in between, and my earphones started acting up. I was like, क्या हो रहा है? So I just took a second. Sorry for that, guys. Chalo, and you were saying I didn't get the last line. I'm so sorry. I didn't get the last line. You were saying something towards the end. I was just asking if there's anything I can, sing for you all, if you want me to sing. Any of Yeah, guys. Any song recommendations that you would want to put in from your end? This is your time. We are taking an open recommendation house. Okay. So I had. There was this song called Tu Bhi Roega, which released this year, and there was this song Taake Naina, and और कौन सा जादूगरिया is one song that I've written. वो भी मेरा पिछले महीने रिलीज हुआ था. So out of these three, which one's your favorite? I'm going to sing that for you all. I want the one which you wrote. I forgot the name. I forgot. Sorry. I want the one which you wrote. Jadugariya. Can you have that? Oh, sure. Definitely. Okay. So it goes. दरवर मेरे दिल के तोते बनके ये उड़ गए सारे, दब दब के अरमां जो बैठे थे वो खुल गए सारे. दरवर मेरे दिल के तोते बनके ये उड़ गए सारे, दब दब के अरमां जो बैठे थे वो खुल गए सारे. ताने मैंने भी अब तो मारे सखियां,
हाय जब मुस्कामा करके नीवी अखियां, पता नहीं कुछ कुछ कह गया मेरा रता नी लुट पुट ले गया, सब कुछ लबे नाल कोई कर गया जादूगरियां। है ओए पता नहीं कुछ कुछ कह गया मेरा रता नी लुट पुट ले गया, सब कुछ लबे नाल कोई कर गया जादूगरियां। ओ कर गया जादूगरियां, ओए होए होए ओए होए 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 ओ जादूगरियां। ओ जादूगरियां। Thank you so much. And आपका जो smile है, that is enough for I think all the people. People have been saying that when you sing, you smile a lot, and that is absolutely gorgeous, ma'am. And that smile itself is enough to lighten up any day. Thank you so much. That's so sweet of you all. Thank you. जी हाँ मैम, and I think we are reaching the end of today's session. हमारा time भी खत्म हो रहा है. So anything that you want to say towards the end? I would love to see you all in person. That's it. And this has been a very beautiful live session for me. And मेरा तो दिन बन गया. मुझे बहुत मजा आया आप सबसे interact करके. And बहुत प्यारी प्यारी बातें हम लोगों ने की है. Thank you so much for being there, hosting me so nicely. That's it. What else can I say? Just keep supporting, keep loving. मेरा गाना आएगा, please share करना, बहुत ज़्यादा share करना. Absolutely. I'll share it from my end. I'll tell all my friends to share. Guys, remember, when is it releasing? What time is it releasing? So I think at the back end. She'll be joining in. Guys, do get your questions ready. Do get your song recommendations. Do get your song requests ready. Because we have Jyotika Thangri over here. Hello, ma'am. How are you? Hi, I'm good. How are you doing? I'm good and happy Independence Day, ma'am. You're looking fabulous, by the way. And I hope you had an amazing Independence Day. Thank you and wish you the same. You guys have chosen a beautiful Thank you. day to do an Insta live with me. And LP Sure, ma'am. के सभी students और सभी faculty members को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इस दिन की. Thank you, ma'am. Yeah, let's get right into the live. And to all those people watching this, before she'll be joining in, guys, do get your questions ready. Do get your song recommendations. Do get your song requests ready. Because we have Jyotika Thangri over here. Hello, ma'am. How are you? Hi, I'm good. How are you doing? I'm good and happy Independence Day, ma'am. You're looking fabulous, by the way. And I hope you had an amazing Independence Day. Thank you and wish you the same. You guys have chosen a beautiful Thank you. day to do an Insta live with me. And LP Sure, ma'am. के सभी students और सभी faculty members को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इस दिन की. Thank you, ma'am. Yeah, let's get right into the live. And to all those people watching this, before the live, we never had a conversation, right, ma'am? We never had any predefined questions. So this is going to be completely impromptu, completely candid. We don't know what we're going to ask, so that's going to be really fun. And I'm looking forward to that. So tell me, ma'am, how is your quarantine going on and how are you handling the situation with the pandemic? Oh, I am having a great time. मैं पहले तो मुंबई में थी जब से लॉकडाउन हुआ, बट अभी मैं पंजाब आ गई इसी मंथ की शुरुआत में. I came to my mom and I'm spending a very good time with her. And मेरी मम्मा स्कूल में जॉब करती है तो उनको भी मेरे साथ क्वारंटाइन होना पड़ा क्योंकि मैं मुंबई से आई थी. सो उस बहाने हम लोग ने बहुत बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ. I've been eating so many dishes. Mom has been cooking for me. And then every day सुबह की वो जो कॉफी होती है पहली मम्मा के हाथों की वो मिल रही है मुझे. So I am a happy kid. And I can see that on your face. I think यही सबसे बड़ा एडवांटेज है क्वारंटाइन का. हम सब लोग घर चले गए. I was personally stuck in Punjab for 2 months क्योंकि कैंपस बंद हो गया. I was staying outside and I didn't know that कि क्वारंटाइन इतना बड़ा हो जाएगा. And I remember traveling in a train filled with people, then traveling in a bus filled with people while Corona was at high, just to see my mother at home, just to have food from home. And I think this is what we are all looking for. Like यही सबसे एडवांटेज है क्वारंटाइन का कि घर में बैठे हुए getting homely food, getting the morning coffee. Absolutely. And yes, ma'am. And Independence Day, what special did you do today? What's the special thing that you did today on for the Independence Day celebration? Today it's a very special day for me because मैं मेरे friends के साथ में मिलके मैंने मेरा पहला independent project बनाया है. We've made an indie music. It's a song for Independence Day
और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोटिवेशनल सॉन्ग। और अभी हम लोग एक्चुअली पूरा दिन उसमें ही लगे हुए थे एंड कुछ ही देर में वो गाना रिलीज भी हो जाने वाला है। सो आप लोग सब बहुत प्यार भी दीजिएगा, उस गाने को शेयर कीजिएगा, सुनिएगा अगर आपको अच्छा लगे। आई ट्राइड टू राइट अ सॉन्ग लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पहले इस तरह का गाना कभी नहीं लिखा है, सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ मैम, यू वेटिंग फॉर दैट। आई बिलीव सॉन्ग का नाम है जुनून पे सवार। आई सीन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आई बिलीव दैट्स द नेम। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आर बीइंग द ट्रेंड राइट नाउ एंड आई होप आपका भी काफी बड़ा हिट हो जाए। थैंक यू सो मच। जी हाँ मैम। एंड बिफोर वी स्टार्ट गोइंग टू द अदर क्वेश्चंस, कैन वी हैव अ पेट्रियोटिक सॉन्ग फ्रॉम योर एंड? क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस से ये प्रॉमिस किया था कि हम काफी सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग गाएंगे आज। वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ पेट्रियोटिज्म ऑन लाइव, सो कैन वी हैव अ सॉन्ग फ्रॉम योर एंड? डेफिनेटली। सो जब क्वारंटीन शुरू हो गया था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, तभी मुझे मौका मिला था एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना। बी प्राक जी की आवाज में तो आपने सुना ही है, तेरी मिट्टी, बट मुझे जी म्यूजिक कंपनी ने अप्रोच किया कि एक फीमेल वर्जन वो मेरे साथ करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी वन सॉन्ग व्हिच आई वुड लव टू सिंग हियर फॉर यू ऑल टुडे। सो हियर इट इज। यस मैम, श्योर। नन्ही से हंसी, भोली सी खुशी, फूलों से वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन सो चांद बुझे, हम नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ Thank you, ma'am. And goosebumps, literally goosebumps right here. That song itself gives goosebumps to all those who, listen to that and hearing it live. We hearing it live. I remember B Prak sir aaya the campus में, I think 2-3 months back before quarantine got over, and we had the opportunity of listening to this live. And अब यहाँ पे भी ये सुन के, it is giving me literal goosebumps right here. Guys, trust me, और ऐसे गाने होंगे और ऐसे goosebumps होंगे. But then let's move on. I don't want to get all things done right away. So let's get right into your story, man. Sorry, I didn't catch you. Let's get into your story. जैसे मैंने आपका प्रोफाइल रीड किया था, you started with quite a few reality shows. जैसे you started with The Voice, फिर then you went to Saregama. So how did you get into the field of reality show? सो रियलिटी शो का बहुत इजी होता है, ऑडिशंस आप दे सकते हैं पूरे देश में, इनफैक्ट अभी तो इंटरनेशनली भी हर जगह ऑडिशंस होते हैं। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे टीवी पर एक दिन मैं देख रही थी, फ्लैश हो रहा था कि द वॉइस इंडिया फर्स्ट सीजन होने वाला है, एंड मेरा तब बीए कंप्लीट हो ही चुका था। सो आई वाज एनीवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मुंबई जा पाऊँ किसी तरह, बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू माय करियर। तो फिर व्हाट बेटर देन रियलिटी शो। तो द वॉइस आया एंड आई यूज टू फॉलो द शो, इंटरनेशनल जो होते थे सभी सीजन्स, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया एंड देन आई वेंट फॉर द ऑडिशंस एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड एंड इट वेंट रियली वेल फॉर मी। मीका पाजी की टीम में मैं सिलेक्ट हुई थी एंड लेकिन मैं उस शो में ज़्यादा देर आगे नहीं जा पाई। सो वो शो जब खत्म हुआ, बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ, बिकॉज उसके बाद फिर मैं मुंबई में ही रह गई, फिर मैं जलंधर नहीं आई, मैं वहीं की हो गई। मेरी मम्मा ने मुझे इनफैक्ट बहुत सपोर्ट किया। शी वाज लाइक यू शुड गो एंड स्टे इन मुंबई बिकॉज यू वांट टू बिकम अ सिंगर। तो वहाँ पर ही अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं एंड एक्चुअली बहुत अच्छा रहा वो मेरे लिए डिसीजन। Yeah, ma'am, I think you're so lucky that your parents were so supportive, because मैंने काफी सारे लोगों की स्टोरी सुने हैं जहाँ पे peer pressure और community pressure के कारण they end up not following their passion. There were a lot of singers, actors, dancers, but then in your case you're so lucky. So how would you say your parents, how would you say they influenced you completely? The support from your parents to take this big decision.
आई थिंक उनके सपोर्ट की वजह से ही मेरी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल जो होता है ना वो कट गया, बिकॉज वो लोग हमेशा मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर जैसे। वैसे मेरे पापा जो है हमने उनको खो दिया था 2012 में, वो एक्सपायर हो गए थे एंड बट उसके बावजूद मेरा जो बड़ा भाई है वो दुबई में जॉब करता है, सो मेरी मम्मा और मैं ही हम लोग रह रहे थे जलंधर में। बट उसके बावजूद मेरी मम्मा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, एक बार भी वो सेल्फिश होके उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अकेले रहूंगी, बट उन्होंने मुझे आगे भेजा मुंबई में। आई थिंक इतना बड़ा डिसीजन। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब सारेगामापा खत्म हुआ उसमें मुझे बहुत बहुत ज्यादा फेम मिला, मुझे लोग पहचानने लगे, मुझे शोज मिलने लगे ग्राउंड लेवल पे। सो बट वो जो एक ग्राउंड लेवल का फेम होता है दैट इज टोटली डिफरेंट, एंड इफ यू वांट टू वर्क इन बॉलीवुड, उस वक्त की बात कर रही हूँ 2016, तो तब अभी तो सिनेरियो काफी बदल चुका है, एज यू सेड इंडी म्यूजिक इज ऑन एवरीबॉडीज माइंड। तो Yes, ma'am. लेकिन अगर बॉलीवुड में उस वक्त ब्रेक चाहिए तो वो एक अलग ही स्ट्रगल होता है, इवन इफ यू आर अ सारेगामापा फाइनलिस्ट। तो आपको मैं अपनी बात करूंगी कि बहुत सारे कंपोजर्स के लिए स्क्रैचेस में गाने लग गए थे, बट आई हैड अ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम मिका पाजी हु वाज माय मेंटर इन द वॉइस, एज आई टोल्ड यू ऑल। सो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, उनके साथ मैं शोज भी करती थी, उनके लिए ओपन करती थी, और उन्होंने बहुत लोगों से मुझे मिलवाया, गवाया, उनको सुनवाया। सो उससे मुझे काफी हेल्प मिला। बहुत सारे स्क्रैचेस गाने के बाद फिर वन फाइन डे one of my songs got selected in film, and that's how I got my first Bollywood break. Yeah, ma'am, that's actually great. So, of all the moments that you might have felt down, कि I can't do this anymore, मेरे से नहीं हो रहा है, I don't know if I'll make it big. How did you overcome those moments? You know, you're alone in Bombay, you're there, बड़ा सा इंडस्ट्री है. There are moments. There might have been moments you might have felt कि नहीं होगा ये मेरे से. So, how did you overcome those moments and reach where you are today? So that's very true. ऐसा होता है क्योंकि आप इतने सारे गाने रिकॉर्ड करते हो, उसमें से एक भी रिलीज नहीं हो रहा होता है। आप देखते हो, आपके देखते ही देखते दूसरा ही कोई वो गाना गा के चला जाता है और फाइनली उसका गाना आता है। तो एक मौका मेरे साथ ऐसा आया था, बट देन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मैं म्यूजिक छोड़ दूं या मैं चली जाऊं। तो मुंबई में मैं जब थी एंड मेरे गाने में काफी रिकॉर्ड करी थी, बट कुछ रिलीज नहीं हो रहा था, तो मैंने ट्राई किया कि ठीक है, आई स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, लाइक जिंगल्स गा दूंगी। और क्योंकि आपको पैसे भी चाहिए, आप इतने बड़े शहर में रहते हैं, यू हैव टू सर्वाइव। एंड इवन दो माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव ऑलवेज, मुझे कुछ भी जरूरत होती तो वो लोग दोनों हाथ फैला के मुझे मदद करने के लिए तैयार थे। बट आई डिडंट पर्सनली वांट दैट, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना था, मुझे कुछ भी नहीं मांगना था उनसे पैसे। सो वो भी एक मौका था, बट देन आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम मिला, बहुत अच्छे लोग मिले। सो उसी वजह से आई कुड मेक इट इन दिस मच ऑफ टाइम। सो आई थिंक लक ऑल्सो मैटर्स, एंड ऑल्सो आप करते रहिए, आपको हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। आई थिंक एक ना एक दिन आपका वो वक्त होता है, एंड यू हैव टू जस्ट वेट एंड कीप वर्किंग ऑन दैट। जी हाँ मैम, try until you succeed. And I think जितने भी freshers, you might not want to do a 9 to 5 job. You might not want to do any, let's just say, a normal job. But then if you want to do something great, you'll have to try. There will be failures. Sooner or later, you will face a moment where you'll have to give up. You might want to give up, but then you'll have to push through. You'll have to see that, okay, I can do it. एक दिन आएगा जब I'll be proud of myself. Absolutely, that's very true. Yes, ma'am. And I'm getting a lot of song requests also. I'm getting a lot of people saying, "Bhaiya, bolo song ke liye." So, can we have a song from your end? Any song of your choice? Definitely. Actually, मैं भी बहुत सारे messages पढ़ रही थी, and I wanted to say hi to all of them, but it's actually not possible because so many of you guys have joined us, and thank you so much, man. I mean, it's such an honor कि आप वक्त निकाल के हम लोग से मिलने आए हैं इधर। And I could see एक तो request, वसुंधरा कॉल, उन्होंने एक request दिया है, फिर भी तुमको चाहूंगी। So I'm gonna sing a few lines of that for you, वसुंधरा. Yes, ma'am. I hope you will like it. And also this song, ये मुझे मेरे करियर के काफी शुरुआती दिनों में गाने मिला था, so it's very special and close to my heart. Okay. Yes, ma'am. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हमको जाए,
I don't think I need to say anything क्योंकि इतने अच्छे comments आ रहे हैं. I don't think I need to put anything from my end. And I actually listened to the song on YouTube once क्योंकि जब ये song release हुआ था, we had the movie version. So I was browsing through YouTube. I found the female version of the song, and I was like, this should also be there out there. This should have been in the movie as well. This is as good. And live sunke, it's a better feeling. So I'm expecting कि quarantine के बाद we can have a live performance from your end. Okay, In LPU. that'll be amazing. I would love to be there. जी हाँ, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स इवेंट मैनेजर्स देख रहे हैं गाइस, सुनो, मैंने अपना काम कर दिया, मेरे यहाँ से डील फिक्स किया है. अब आप लोग देख लेना क्या करना है, कैसे करना है. आफ्टर क्वारंटाइन वी आर हैविंग अ परफॉर्मेंस. दैट्स इट. आई डोंट नो व्हाट्स हाउ नीड टू बी डन. I would love. जी हाँ मैम. Yes ma'am. So when it comes to music, which is your favorite genre, and you know which music do you usually listen to? Folk, since I am a Punjabi. Folk. So Punjabi folk. Okay, so can we have a Punjabi folk song from you? Because I don't listen to that much Punjabi folk. I am not that exposed to that side. So any Punjabi folk song that you want to sing? Okay, so there's one song that I always love to sing whenever I'm performing wherever in the world I am. So वो ही गा देती हूँ. Here it goes. Allah for Allah, chambe di booty, मन दी मिट्टी विच लाई तू, इस मिट्टी दा ना मौसम कोई, हो बिन मौसम यार खड़ाई तू, ओ जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, अते जिसे बूटी लाई हो फिर मेरे जुगनी जी, ऐ वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी, ऐ वे नबी पाक दी जुगनी जी, ऐ वे मौला अली वाली जुगनी जी, ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी. Thank you, ma'am. And even though I couldn't understand that much, but I'm just feeling आ रहा था कि अभी नाचना है, मुझे अभी नाचना है. और like if I dance, everyone will run away. Usually I stop myself. That's why. So otherwise I would have danced then and there. That is the power of this song, and mostly that is the power of Punjabi folk. I think कोई भी अपना जी हाँ मैम. अपने आप को रोक नहीं पाता पंजाबी सुन के. और मैं देख रही थी बहुत सारे मैसेजेस आए थे, कोई तो लिख रहा था सिरा. Epic. Thank you man, thank you so much. जुग जुग जीवे ज्योतिका जुगनी जी, love you. Singer मौसमी, I think she is a singer too. Okay, so okay. Another time we will invite her as well. I am all ready. We just want people to come in. We just want, you know, अभी quarantine के time we can't have people in the campus. So for all the freshers, अभी admission का time है, so we are having a lot of freshers joining in. So we want to show them कि even though it's quarantine, यहाँ पे हम फिर भी events करेंगे, यहाँ पे हम फिर भी celebrities को लेके आएंगे. And you're one of the best celebrities that we have had so far. Thank you so much for this, man. Thank you so much. That's very sweet. Yeah, ma'am. And from when have you been, you know, practicing the art of singing? Just say from a childhood age. So how long have you been practicing this? So I think I remember I was 6 or 7 years old, and मेरे स्कूल में ही मेरे गुरुजी मुझे मिले इनफैक्ट, और वो म्यूजिक टीचर थे हमारे, और फर्स्ट डे था उनका क्लास में, एंड ही आस्क्ड एवरीबॉडी टू सिंग अ सॉन्ग. तो मैंने भी गाना गा दिया, एंड उनको बहुत अच्छा लगा. एंड देन पेरेंट्स टीचर मीट पे उन्होंने सजेस्ट किया मेरे पेरेंट्स को दैट आई शुड स्टार्ट लर्निंग बिकॉज आई हैव अ गुड स्कोप एंड गुड वॉइस. सो मेरे पेरेंट्स ने बोला ओके, एंड मैंने उन्हीं से सीखना शुरू कर दिया. फिर मैंने 15 साल लगातार मेरे गुरुजी श्री धर्मेंद्र कथक जी, उनसे मैंने सीखना शुरू किया. इनफैक्ट इट्स हिज बर्थडे टुडे. हैप्पी बर्थडे गुरुजी. Okay. Happy birthday, Guruji, from my side as well. सो या, तो उन्होंने मुझे सिखाया, एंड फिर मुंबई जब तक मैं शिफ्ट नहीं हुई तब तक आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड दैट्स हाउ. Okay, so it's been like 15 years, 15 to 16 years of continuous practice. Guys, so no, you have to put in that much practice if you have to make it fuse. You can't make it in a day or two. लगता है क्या? It takes more than a decade of practice, and proof है हमारे सामने अभी. She has put in a lot of practice, and right now she is one of the best singers that we have.
थैंक यू। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इतने साल मतलब ऐसा, अगर कोई एस्पायरिंग सिंगर है वो सुन रहे हैं इस बात को, तो आप कभी भी चाहें तो आप सीखना शुरू कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कोई भी चीज में, इनफैक्ट नॉट इन जस्ट म्यूजिक। So you can do anything if you are interested in it and you are ready to put in time and efforts. So. Yeah, ma'am. And I've got a question. It was an old question. I forgot about it. It was like any Riyaz tips. So I was getting that question repeated. So they wanted tips regarding Riyaz and practicing. So what would you give as tips for an aspiring singer? So if you're a beginner, then you must stay like learn to stay on one note. तो आप क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या होता है कि आप कोई भी सुर को सा बना सकते हो। सो आप कोई भी सुर लीजिए से कुछ भी हाँ, तो आप उस पे ना आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बहुत देर तक एंड कोशिश कीजिए एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट ना आफ्टर 10-15 मिनट्स यू विल लाइक ऐसा मेडिटेशन स्टेट में चले जाएंगे। सो यू नीड टू रीच देयर। आपको अपने गले को याद कराना पड़ेगा कि हाँ ये नोट है और उसको रेफरेंस बना के फिर आप 7 सुर होते हैं, वैसे टोटल 12 होते हैं बट 7 सुर जो होते हैं बेसिकली आपको उनसे दोस्ती करनी है। सो सारे गामा पा नी, उनको आपको याद करना है कि सा अगर आप कहीं से भी शुरू करें आप रे गा मा पा धा नी गा सके। सो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है और उसके बाद आप जब फेमिलियर हो जाते हैं सुरों से तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं। देन यू कैन प्ले अराउंड विद देम, कंपोज, सिंग, व्हाटएवर यू वांट। Yeah, ma'am. And even though I didn't get the technicality, जो भी पूछा, I hope you got the answer. There was a time when I sang on stage. I remember a few months back before quarantine got over, there was this EDM night that we had. So we made this EDM, me and my co-anchor, we made this deal कि event खत्म होने के बाद we will do the Cream We Will Rock You वाला in front of the audience. So we had nearly 10,000, 15,000 students there. Last day of the college fest. तो EDM night खत्म हो गया. हमारे पास I believe 10 to 15 extra minutes था, तो हमने सोचा कि चलो करते हैं, let's do it. So my throat was messed up. I had spent it complete like तीन दिन का festival था. I had a completely destroyed throat. It's not like अच्छा throat के साथ भी मैं गा सकता हूँ, but then excuse है मेरे पास कि my throat was destroyed. My co-anchor's throat was also destroyed. So we were there and we started singing and luckily people didn't run away. People actually started dancing to the song and we had a great amount of students who were singing We Will Rock You Back. So they were putting the beats in, we were doing it that. So that's the only experience I have singing. पर उसके बाद हमारे फैकल्टी ने बोला कि सुनो बच्चा, अब तुम सिंगिंग छोड़ो, just stick to speaking on stage. Let's leave the singing to the professionals. We'll call somebody if you want to do a stunt like that. चलो sir, as you say sir, I'm not going to sing anymore. But that's great to know about the moment you guys had. It's amazing. और जब बहुत सारे लोग एक साथ गाते हैं तुमको पता है, it's a fact कि कभी वो बेसुरा नहीं होता है। मतलब भले कोई भी अलग अलग कुछ भी गा रहा है बट एक साथ ना जब बहुत सारे लोग गाते हैं ना, it comes out in one sur only. So that's a crazy fact, but yes, it is. Yes, it did come out like that. Thank God. I don't know what happened. I was pretty sure they'll kick me out, but it didn't happen. I was pretty happy with that. Super. Yeah, ma'am. And I wanted to get to the song that you're releasing today. That's something I want to talk about a lot. Like this Junoon Pe Sawar. On the day of on Independence Day, you're releasing a song. So Yeah. do tell us something about that. It's an independent song. आजकल काफी trend में चल रहा है. So do tell us about that. Okay, so ये जो गाना है ना, एक्चुअली हम लोग ने अभी के सिनेरियो को देखते हुए कि बहुत सारी ऐसी दिल तोड़ देने वाली चीजें रोज सुनाई देती है। कोई ना कोई न्यूज आती है, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो हम लोग बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को यही याद रखना पड़ेगा दैट वी नीड टू गो ऑन एंड हम लोगों को ही हिम्मत रखनी पड़ेगी। और मुझे पता है जिसके साथ बीतती है उसको ही उसका एहसास होता है दर्द का। बट स्टिल वी नीड टू कीप गोइंग ऑन एंड कीप रियलाइजिंग हम लोग के अंदर जो शक्ति है, जो हमारे अंदर पावर्स है, जो भी हमारी खूबियां हैं, उनको लेकर हमें आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। So that was the motivation for me to write the song. And also I would like to tell you all that the song is being composed by Kushal Paul. He's a very good friend of mine and he's a great composer and it's his debut actually as a composer independent music में. But trust me, जब आप ये गाना सुनेंगे ना, आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसके एक एक शब्द को सुनकर इसका मीनिंग समझकर अगर आप उसको इम्पोज करेंगे अपने ऊपर तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम द जनरेशन, फ्रॉम द यंग जनरेशन, द पीपल वी हैव, you guys, in fact we all are the future of our world and हम लोगों को ही हिम्मत रखनी पड़ेगी। So yeah. Yeah, can you have a teaser? I don't know if I'm supposed to ask this, but after listening about that so much,
can you have a small teaser, like LPU Live exclusive teaser of Junoon Ke Sawal? It is actually going to be very exclusive because I've never sung this song पहले यहाँ से कोई भी जगह पे. And okay, let's do this. Actually, I'm gonna sing the first verse of the song. So पहली कुछ Sure. लाइनें जरूर आप लोगों के लिए गाऊंगी exclusively on LPU's Instagram, guys. I've not done this anywhere before. So yes, do tell me आपको कैसा लगा. Let's do And guys, you're welcome. Many पूछा. I'm not sure if I've asked this, but many just पूछा. So guys, you're welcome. Okay. उड़ जा रे परवाज़ भर, बाकी है तेरा सफर. तू आग है जल गिरे तो संभल, तू चीर के बादलों को निकल. है ख्वाब बड़े तो हाथ बढ़ा, जो साथ दे तो बदल दे जहां. जागा है सवेरा लेके रंग हजार, आजा रे तू अपने जुनून पे सवार. एक हो जाए जब 100 करोड़, हम तकदीरों को देंगे मोड़. तू दिखा दे इंडिया, करके दिखा दे इंडिया. लाना है एक ऐसा दौर, होगा जहां बस अपना शोर मचा दे इंडिया. करके दिखा दे इंडिया. Now I'm just waiting for the song. मैं कुछ नहीं बोलने वाला. I'm just waiting for the song. I'm getting the feeling कि अभी कुछ कर रहे हैं. Let's do something. Let's do something. That kind of feeling is what I'm getting from the song. And I'm just waiting for it to be released in the next few hours, guys. So no, next few hours में do visit ma'am's profile. You'll get the song, listen to it, and go do something. Just go do something. Oh my God, you don't know, I'm so emotional right now. I mean, seeing the reaction ऐसे सामने अपना गाने का, because it's like a baby for me. और आपको अच्छा लग रहा है. Oh my God, let me see the comments also. Thank you so much guys. मुझे बहुत encouragement मिलेगा अगर आप लोग इस गाने को support देंगे. And फिर मैं बहुत सारे गाने बनाऊंगी ऐसे. जी हाँ मैम, and we'll get more exclusive on LPU Live. We'll keep supporting you to get more exclusive on LPU page. We hope that you keep on creating songs and we'll be here to listen to them, ma'am. Thank you so much. Thank you. God bless you all. Thank you, ma'am. And you know, before I started this live, I had this thing in mind that कि आज बहुत सारे लोग हमारे साथ join करने वाले हैं who are from an army background, जिनके parents अभी army background में हैं. And there are people who are going for an army examination or trying to get into the army. So for them, I want to do something special. So before we get to that, can we have a few words from your side for all those people whose parents or grandparents are from the army background? I think आप लोगों को तो मैं और क्या बोलूं, आप लोगों को शत प्रणाम है. आप जो काम करते हैं एकदम सेल्फलेस होकर अपनी आपकी फैमिलीज को भी बहुत बहुत सल्यूट है मेरी तरफ से कि आप अपने बच्चों को जाने देते हैं अपने से दूर, ये बिना सोचे कि वो वापस आ पाएंगे कि नहीं कल को, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है खुदा ना करे. तो आई मीन you guys, the way you contribute to the society is incredible. उसका कुछ मोल नहीं लगाया जा सकता. It's अनमोल. तो आप लोग को बहुत बहुत प्रणाम है. और मैं तो being a musician, being an artist, मैं सिर्फ अपने म्यूजिक से ही आप लोगों को एक सल्यूट दे सकती हूँ. एंड आई होप आप लोगों को तेरी मिट्टी अच्छा लगा हो. So I would like to dedicate that song to you all and to your families. So that's it. Yeah, ma'am. And I think we're able to sleep properly at night just because we have such amazing warriors at the border. जो सुबह से रात तक in extreme conditions they are protecting us. And आज Independence Day में I'd like to salute each and every person, no matter which role they perform in the army, no matter what they have done for the army, for serving the country. It takes great courage, it takes great effort. And I don't think we appreciate them enough. हमें और appreciate करना चाहिए. And it's not just on Independence Day or Republic Day. हर दिन we have to remember कि they sacrifice day in day out, and it's just because of them that we are able to sleep at night. We are able to be so safe. That is very true, and here's a salute from my side, and it's really heartfelt. So thank you so much, very big thank you. And like I said, I want to do something special. So
patriotic songs hai. We have Teri Mitti, but we have a lot of people more joining in. So for them, can we have one more patriotic song? Any song of your choice from your end? Definitely. If there is anything, I can see Vande Mataram also किसी ने लिखा है. If there is any other, in fact, actually, we can do Vande Mataram. Sure, man. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है. 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं. मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है प्यार ही बस तेरा. माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. Thank you so much, ma'am. And speechless, literally, आप absolutely speechless हुए हम पे, क्योंकि अभी मुझे याद है पिछले साल जब इंडिपेंडेंस डे हुआ था, I went to the Wagah border in Amritsar. It was so rushed up. It was like a huge crowd was there. काफी मुश्किल था अंदर पहुंचने के लिए, but then I remember वहां पे they played Vande Mataram out there, and we had a huge crowd over there. They were all chanting Vande Mataram, and I think everybody at home right now is getting a similar feeling. Ki, हाँ, this is India. We are proud to be Indians. And if anybody hasn't visited Wagah border, guys, do visit Wagah border. It is something absolutely, I can't put it in words. It's something, it's a different feeling. I'm sure. I've been there, and it is, surely it is. It is, ma'am. Thank you so much for that song, and I think काफी सारे लोग अभी emotional भी हो रहे हैं comments में, you know, they're reminded of their background, they're reminded of all that they had to go through, and a salute to all the warriors of India, a salute to all those who are there on the borders and supporting us. Absolutely. जी हाँ. So, ma'am, like let's move a bit forward. So let's get the emotional state out. हर दिन जब भी मैं live जाता हूँ, this what I do. That's called a rapid fire round. जो भी celebrate करते हैं, I do a rapid fire round. And you know, completely impromptu. I don't even have the questions. आज के लिए भी questions भी नहीं है मेरे पास. Usually I have set of questions. आज वो भी नहीं है. So I'm gonna shoot questions from my mind, and you have to reply within 5 seconds. Chalo. Done? Let's do it. Chalo, ready? Okay. So let's start with simple questions, and I'll go for a bit tougher ones. Okay. 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 Favorite food? Pasta. Favorite travel destination? USA. Okay. Favorite actor? Shah Rukh Khan. Favorite actress? Deepika Padukone. Favorite singer? Sonu Nigam and Sunidhi Chauhan. Okay. So if you had a chance to take someone to Mars, yani wo planet Mars, who would you take? I can't live without my mom ज़्यादा देर तक, और अगर मार्स जाना है तो लंबा ही होगा. So yeah, I would like to take her. Okay. If you were given the opportunity to spend your last day on Earth with 3 people, whom 3 would you choose? Okay, of course it's gonna be my mom. It has to be my brother, and it has to be my bhabhi also. So I'm being a little, I don't know, diplomatic or whatever you call it, but yes, family comes first to me. So they. Okay, that's fine. I can relate to that as well. Family always comes first. Ji haan, ma'am. So next one, favorite song. My favorite song, I just sang it, Jugni Ji. It's my all-time favorite.
All-time favorite. All right. Favorite movie? Um, Actually, it keeps changing. I watched this very amazing movie called Shakuntala Devi. I loved it. Vidya Balan. It It was was an amazing movie. everyone should watch it. It's beautiful. Yeah. So, okay, so we're going to be Shakuntala Devi for now. All right. Favorite performance that you've done so far? I went to Nepal last year. It was in LOD. It's the Asia's biggest club, and the crowd there was amazing. The feel, the vibe, and my band also played amazingly well that day. So yeah, I keep All reminding right. So, of that yeah. performance. Favorite song that you've sung? Ah, that's a nice one. It has to be Ishq De Paniyar from Fukre Returns. It's a beautiful one. Okay. If you haven't heard it, you We should will go. we'll get to that song after some time. We'll have that song on live. So now I'm going for a tougher question. Favorite judge from Saregama? Sorry, favorite judge. Judge from Saregama? It has to be Mika Paji. Okay. And from The Voice? Sunidhi Chauhan. Trinity Chauhan. So when I ask these questions to people, right, usually they will like, who can I say? काफी diplomatic हो जाते हैं. You're the first one who said outright कि ये मेरा favorite judge है. That मेरा plan पूरा खत्म हो गया. I was planning to trap you with questions, but then you were outright there and you're there. So guys, I'm done with my questions. If you guys have any, rapid fire questions from your end, do put it there. Let's ask that because मेरे पास जितने भी questions है खत्म हो गया. Or for the rapid fire. So if you guys have any rapid fire one-word questions, do ask them. Let's see if they can get creative. So are we gonna ask the people like लोग लिखने वाले कुछ? Yeah, we'll just take 2 seconds and we'll see if they have any one-word questions that they can ask. Let's see how creative the students of LPU are. क्योंकि मेरा जो plan है पूरा खत्म हो गया. I plan to trap you with the question, वो तो खत्म हो गया. Got you. Guys, it's not fair. I love you all too, Chirag, Gising. Thank you so much. Sujit Kumar, Arya. All right, so I don't think they are dropping any questions, guys. आप भी मुझे, you guys are also trapping me. I hope that my okay, favorite place on earth. Favorite place on earth. Oh, sorry, favorite place on earth? Yeah. That's a difficult one. It has to be, I don't know, I went to Mauritius. It was very beautiful. Okay, so Mauritius. Guys, very good. एक और question डालो, guys. Come on. We need more questions from your end. Acha, I can see there's a very talented singer and very beautiful friend of mine, Sharvi. So वो भी उसने भी join किया हमको. And she's asking me who's my favorite composer. Okay. So I think there are many, but I think Amit Trivedi is one of them whom I really want to work with. Right. I remember Amit Trivedi. He also came to the campus with Coke Studio last semester. One of the best events that we had. He started with Namo Namo, and he had a lot of songs. Ek Tara, so and Dear Zindagi, Love You I've seen Zindagi. him So perform. I've seen his live. It's amazing. And you know what, Sharvi, whom I'm talking about, जिसने मुझे पूछा, she has sung Amit Trivedi's latest single, Morni hai. Beautiful it is. I just love it. Love you, Sharvi. okay, so guys, event organizers, we have someone, a talent singer Shari with us. We'll bring her live tomorrow, day after. I'm leaving that to you guys. She has sung a song you want to hear. And also, Sharvi has sung in our song Junoo Pe Sawar. So उसकी भी आवाज आपको सुनने मिलेगी. Sharvi ने भी गाया हुआ है. So आज ही आप Sure. सुना. We are looking forward. I got a question. Favorite instrument? Violin. Do you play the violin? I do. Oh, that's a really of all the instruments that I know, I would say piano and violin. I do follow a bit of classical music, so piano and violin have always been there with one of the toughest instruments that I know I've known. It actually With it's classical composers. I don't play it so well, but I know thoda bahut, so I can play a little bit. Yeah. So I do follow a bit of them. So I've seen them suffer a lot. Ki ye kaise karne, the bow strings and it needs to be parallel. So I'm not sure if I'm getting the technicalities right, but then what I've seen so far, that's what I've got to know, that violin is pretty tough to master. It is. Alright, so let's move on from the rapid fire round. The song that you were talking about from Fukre 2. Now it's a time for that. Your favorite song that you've sung so far. Let's have that here. Definitely. Before I sing, I have to answer this. Sneha, I
has written, can you play a bit? I would love to have played it for you, Sneha, but I don't have my violin on me right now. It's in Mumbai, so next time. Or maybe Next time, another time. I'll make a video and post it to you. Alright, let's do Ishq De Fanniyar. इश्क दे फनियर लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए, सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए, इश्क दे फनियर लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए, सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए, सौ सौ बातें मारे अखियां मारे अखियां मारे अखियां, उस नीचे छत से उतारे अखियां उतारे अखियां उतारे अखियां, सौ सौ आवाज़ें मारे अखियां, एक उसका नाम पुकारे, सोने रंग दे रांझिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे रांझिया, पूछ ले तू चांद से गिनती हूँ तारे, ओ डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे रांझिया. Absolutely beautiful, ma'am. And I think the audience also loved it. They are putting a lot of comments and they are pretty much loving your performance. And I think we're all excited to see you in campus. बस वही हमारे भी bucket list में कि quarantine खत्म हो जाए. We'll have ma'am in campus. We'll have an amazing concert out there. We'll bring your friends as well. We'll bring all the performers and we'll have one hell of a concert back in the campus. Wow, that sounds amazing. Okay, let's do this jaldi se. Yeah, jaldi se. I'm just saying, Corona, bhag jao. We are having a performance. We need you to go. We don't want you anymore, Corona. Please go. Yeah, ma'am. And this is a question that I usually ask people when they come on live: is that if you were to meet your younger self, let's just say your 5 or 6-year-old self, and what would you say, to that kid out there? कि future कैसा है यार? क्या? What would you say? मैं बोलूँगी सही ही जा रही हो, जो कर रही हो करती रहो, बस शिद्दत से लगी रहो बेटा. What's the answer? Right. I didn't expect that answer. I was expecting something a bit more. I'm caught off guard right here. Just give me a moment. Let me catch myself. All right. I have a song that I wanted you to personally sing, which was Palo Latke, which became a huge hit. Like it became a great trend. It became a great trend. Make you realize that, oh my god, this is such a good song. This is there, and we want to dance to that song. So can we have that? Definitely, I have to sing that song for you all. You have made it such a massive, biggest hit of my career as yet. So thank you so much, and I dedicate it to you all. Here it goes. Hi, 2 तोले की मुंदरी लाते, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना, ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा ससा झटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जाओ बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, रफेस बलेती घूंघट देसी ब्लेंड बढ़ाई धाकड़ तो, बॉलीवुड मेरा डंका बचता, डाउन तो रख थोड़ी आकड़ तू, ब्यूटी ने किए मेरे लौंडे बावले, बात अलग मेरे फेस में, रे कैटेगरी ना घनी से पर मेरी जैसी नरानी पूरे देश में, रे धीरे धीरे चुनरी सरकने लगी, मेरी धक धक धड़कन बढ़ने लगी, थोड़ा क्लोज तो आजा बेबी मुखड़ा दिखा जा, बिना पीते ही मुझे तो यार चढ़ने लगी, साजना वे आंख तेरी है बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से, है ऐसी चीज रे, है नियत की खोटी कर दी बदमाशी, बेईमान भी है ये हाँ अच्छी खासी, मान जाना कर मनमानी, बोली जावे मेरी जवानी, मेरे जलवों का असर है सबसे हट के से,
पल्लू लटके. Oh, I just spoiled the song. पल्लो लटके जरा सा आहा जरा सा ओहो जरा सा टेढ़ो हो जो बालमा पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके. I can't even look. I just spoiled the song. Sorry, guys. If it was on stage, I'm pretty sure chorus में हम गाएंगे तो मेरा आवाज उतना नहीं आएगा. So I would have got lost in But you the did, you audience. sang, right? You caught it. Yeah, I did get it. Although not that good, but chalo, me. And I think like we are reaching towards the end of today's session. So anything you want to ask me? I had an amazing time talking to you. इतना candid, impromptu live अभी तक I don't think LPU live में अभी तक हुआ है. Thank you so much. So anything you want to ask me or to the audience who's enjoying this session? I would actually like to ask you if you guys are having fun, if you think that this was worth it, because सबका time जो होता है it's very precious. Or obviously you could have done anything else, but you decided to be here with me, and it's actually a very big honor for me. और मुझे बहुत मजा आता है जब भी मैं face to face, because I'm really missing that face to face connection, and जो stage पे हम लोग करते थे, because there are no stage shows happening since so many months. So I personally love doing these kind of lives, and जहाँ पर लोग इतने प्यारे प्यारे comments मुझसे लिखते जा रहे हैं, they're sending me so many hearts. Thank you so much, guys. Thank you for all the love. And what can I ask you? अच्छा, आप लोग बताओ, आपको मेरा सबसे फेवरेट गाना कौन सा लगता है? Your favorite song so far? Yeah. I would say Palav Latke is my favorite, and फिर भी तुमको चाहूंगी the female version. Those two would be my favorite. Thank you. So I sang it for you. Then तो हो गया. If there is anything else, अगर आप from the audience, me, guys, anything.